Good morning, students. Today we are going to start types of sets. First is empty set. Set that does not contain any element is said to be empty set or null or void set. It is denoted by phi और empty curly bracket. अब इसका कोई एग्जाम्पल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, suppose we have set x such that x is any real number and x square equal to 1. There is no real number whose square is 1. तो इसमें x कोई आएगा ही नहीं, कोई एलिमेंट कंटेन नहीं हो. n such that n is natural number and 2n is 1. There is no natural number which when multiplied by 2 will give 1, and half आएगा but natural number नहीं है. So these are empty. Now let us discuss second type of sets, finite and infinite sets. Finite and infinite sets. A set which is empty. ये भी finite है. Set which is empty or contains the finite number, contains the finite or definite number of elements is known as finite set. Otherwise it is known as finite set. Otherwise it is called infinite set. Otherwise it is called infinite set. For example, set of first 3 multiples of 2. This will be 2, 4, 6. पहले 3 मल्टीपल ये 2 के 3 मल्टीपल्स. So it is finite set क्योंकि यह डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है. फाइनाइट. अदर एग्जांपल, x such that x greater than equal to x plus 1. कोई भी नंबर अपने से प्लस 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पे साथ में x इज ए रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर दैट रियल नंबर प्लस 1 से ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा, इज एम्प्टी एंड हेंस फाइनाइट. एम्प्टी सेट भी फाइनाइट है. नेक्स्ट,
set of even natural numbers जो होगा 2 4 6 8 में अपर लिमिट नहीं है तो इट इज इनफाइनाइट. Then set of integers set फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्म में you'll write this way -3 -2 -1 0 1 2 3 is infinite. Similarly real number etc. तो इनफाइनाइट में भी इसमें कम एलिमेंट है इसमें ज़्यादा है लेकिन दोनों इनफाइनाइट है. नाउ वी हैव वन मोर टाइप, सिंगलटन सेट. It is a set having only one element, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा. For example x such that x is natural number and 2x is 4. तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे x2 आएगा, 2 नेचुरल नंबर है, इज सिंगलटन इक्वल सेट्स. ये सब सेट्स पढ़ेंगे तब भी आएगा. 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have same element. Means elements of A are in B and elements of B are in A. Or if all elements of A are in B and all elements of B are in A. For example, A is the set -1 1 and B is the set x such that x is a real number, x square equal to 1. तो यहाँ से भी -1 और 1 आएगा. तो A and B have exactly same element. So I will call A equal to then you can define equivalent sets. Equivalent sets. Finite sets are said to be equivalent if they have same number of elements. सेम नहीं होंगे, same number of elements. For example, A is equal to 1 2 3, B is equal to x y z are equivalent sets. In the next class
will be doing exercise 1.2 of NCERT.